all my students and parents and followers. Good morning, all of you. Today I want to teach in poetry The True Beauty. The name of the poem is The True Beauty, composed by Thomas Carrew. What is beauty? First of all, you should know what is beauty. Beauty in Hindi, you know, Sundarta. Beauty is truth, truth is beauty. सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है. सत्यम शिवम सुंदरम. According to poet Thomas Carrew, in this poem, the poet tells that there are two kinds of beauty: physical beauty and spiritual beauty. Physical beauty means शारीरिक सुंदरता. Spiritual beauty means आध्यात्मिक सुंदरता. Physical beauty is not permanent beauty; it is short living. But spiritual beauty is permanent; it never dies. So the poet wants to tell us that physical beauty is a transitory thing which depends on the beauty of any person or any personality or any lady, while the spiritual beauty depends on art and knowledge. In this way, the poet tells that spiritual beauty is not permanent beauty. It is not certain for every time. So, he advises us that we should not run behind the physical beauty, and tells that we should run behind spiritual beauty because spiritual beauty never dies. In this way, the poet tells that the man who loves a woman for her rosy cheeks, coral lips, star-like eyes, but he does not know when the old time will come, all the beauty, physical beauty, like rosy cheeks, coral lips, star-like eyes will also die. So always try to get rid of physical beauty, and we should love spiritual beauty because spiritual beauty never dies. It is eternal. It is the summary of the poem. In Hindi, इस कविता में कवि बता रहा है कि सुंदरता दो प्रकार की होती है: शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता. कवि कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो केवल शारीरिक सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं. वह यह ध्यान नहीं देते हैं, उनको यह जानकारी नहीं होती है कि शारीरिक सुंदरता जो होती है वह अस्थायी नहीं होती है. यह तभी तक सुंदरता होती है, सुंदर होती है, जब तक मनुष्य जिंदा है. मरने के बाद उसकी चाहे वह रोजी चीक्स हो, कोरल लिप्स हो, स्टार लाइक आई जो, यह सब समाप्त हो जाता है. इसलिए कवि सलाह देता है कि ऐसी सुंदरता से हमको हमेशा दूर रहना चाहिए. हमेशा हम लोगों को ऐसी सुंदरता से प्रेम करना चाहिए जो अस्थायी हो, कभी समाप्त न हो. वह सुंदरता क्या होती है? आध्यात्मिक सुंदरता होती है. वो ज्ञान की सुंदरता होती है. ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है. जैसे आप लोग जानते होंगे, यह आपका जो महाभारत है, रामायण है, ये क्या है? महाकाव्य है. इसको कौन लिखा है? वेदव्यास ने लिखा है और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है. महर्षि वाल्मीकि बहुत सुंदर नहीं थे, वेदव्यास बहुत सुंदर नहीं थे. या और जो सुंदरताएँ होती है जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, या अन्य प्रकार की जो सुंदरताएँ समाज में हैं, यह क्या है? अलौकिक सुंदरता है, कभी समाप्त नहीं होती. इनको बनाने वाले समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यह सुंदरता समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह स्पिरिचुअल ब्यूटी है. इसलिए हम लोगों को हमेशा स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्रेम करना चाहिए. नाउ अबाउट द पोएम, लाइन ऑफ द पोएम. बी रेडी एंड लिसन केयरफुल्ली. दिस इज इम्पॉर्टेंट पोएम फॉर योर पोएट्री, and it is a lyric written by Thomas Carey, and the poet tells that he that loves a rosy cheek or coral lip admires, or from star eye doth seek fuel to maintain his fires. The age old time makes this decay, so his flames must waste away. He that loves a rosy cheeks, he means any person, वह व्यक्ति जो हमेशा रोजी चीक्स मतलब गुलाबी जैसे गालों को पसंद करता हो. कोरल लिप्स, कोरल मीन्स मूंगा, लाल लाल होठों को पसंद करता हो, उसकी प्रशंसा करता हो. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, सदैव वह तारों जैसी आँखों को खोज करता हो. और इन्हीं को पाने के लिए फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल मतलब ईंधन, ऊर्जा, मेंटेन मतलब व्यवस्थित करना, हिज फायर मतलब अपनी उत्तेजना,
इन्हीं सुंदरता यानी रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज को पाने में अपने जीवन की पूरी एनर्जी को वह उसी में इन्वेस्ट करता है। बट ही डज नॉट नो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था का समय आता है वैसे ही यह रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज डीके मीन्स पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसलिए हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए ऐसी शारीरिक सुंदरता की ज्वाला या लपट से हम लोग को निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए। इसका हिंदी हो गया। इन द स्टार्टिंग इन इंग्लिश, हियर द पोएट टेल्स दैट we should never run behind the physical beauty like rosy cheeks, coral lips and star-like eyes. But some of them, they have no knowledge about the reality of life. Life is not permanent. One who is born beautiful or be beautiful or handsome, one day he will die. After death, rosy cheeks, coral lips and star-like eyes will also disappear like a wind. The beauty of life is like wind. When it comes, when it will go, not certain. So in the starting, the poet tells that some of them who loves rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes, all this beauty, they run behind. For all this beauty, they run behind, but they don't know. These are not permanent. To get this beauty, they are investing their time, they are investing their money, they are investing their inhan everywhere because they have no knowledge about the physical beauty. And any person, any lady who is most beautiful, her eyes are attractive, her lips are most beautiful, and her cheeks are rosy, but when she will be old, all his beauty of life will disappear or decay. So the poet advises us we should not run behind the physical beauty, and we should never try to run here and there in the search of beauty, because the flame of the physical beauty is very dangerous. One who will search physical beauty, it means he is destroying his life and his career of life. Once again, reference. These lines have been taken from the poem The True Beauty, composed by Thomas Carey. Reference. Context. In this poem, the poet is telling about beauty. There are two kinds of beauty: physical beauty and spiritual beauty. In the first stanza, the poet is telling about physical beauty and advise us that we should not run behind physical beauty because it is transitory things, it is trivial things. Now explain. You can explain. I have told you. Try to explain. Next stanza. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, candle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks, or lips, or eyes. In the second stanza, the poet is describing about physical beauty. In the second stanza of the poem, the poet is telling about spiritual beauty. स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स ज्ञान की सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता, कला की सुंदरता। बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है जो स्वभाव से स्मूथ होता है, यानी कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसकी जो थाट्स होती हैं वह सज्जन होती हैं, डिजायर मीन्स इच्छाएँ शांत होती हैं, हार्ट मीन्स हृदय विथ इक्वल लव कंबाइन, उसका हृदय एक प्रकार के प्रेम से बंधा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या या द्वेष के आगे में नहीं जलता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सुंदरताएँ नहीं हैं। कौन सुंदरता? स्मूथ स्टेट फास्ट माइंड, जेंटिल थाट, काम डिजायर, इक्वल लव बैलेंस नहीं है, वहाँ चाहे भले ही उसके चीक्स सुंदर हों, लिप्स बहुत अट्रैक्टिव हों, रेड हों, आइज स्टार लाइक हों, बट आई हेट, डिस्पाइज मीन्स हेट, ऐसी सुंदरता से मैं घृणा करता हूँ। इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, हियर द पोएट टेल्स दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट ब्यूटी बिकॉज इट नेवर डाई। ए लेडी हु इज very smooth
soft mind, because soft means merciful, compassion, because compassion is the natural quality of a lady. So a lady should be compassionate or merciful. His mind should be steadfast, and her thoughts should be very gentle and ideal, and his desire should be peacefully. And a person, a man or lady who loves with each other in equal balance, it means that wife and husband, lover and beloved, sister and brothers, father and mother, and brother and sister, everywhere there should be equal love. And where there is equal love balance, they will never fire in jealousy with each other. But suppose that where are these not quality, where these qualities are not, what kinds of quality? Steadfast minds, gentle thoughts, calm desire, equal love balance. In spite of this, she is most beautiful. Her cheeks are rosy, lips are coral, and eyes are like a star. But these above qualities, if she has not, I hate such kinds of lady, because physical beauty is not permanent beauty. Spiritual beauty is permanent beauty. So the poet wants tell to us that we should always try to love spiritual beauty, because it will never die. Now, all of you listen carefully, first of all, and then try to explain the line of the poem, because it is very important. And in this poem, we find the figures of speech like from star-like eyes. In this line, there is a simile, and so many lines here. Candle never dying fires, where these are not. I despise lovely cheeks and drips, here a metaphor. So in this way, listen carefully and explain it. It will be your homework. There are two stanza according to your choice. You can select the first or second stanza for homework, and you should write it. I have told you its central idea. I have posted you its central idea, and then you explain it in your fair copy according to your according to your convenience, as you like. And I once again I tell that this poem is most important for your current life. Be happy. Thank you.